Good morning to all of you. Welcome to Unacademy. My name is Samrat Sir Mishra, and in the last sessions we discussed some of the important articles from the Indian Constitution. Article 12 ru start kari ame Article 20 पर्यंत discuss kari सारिथिले, and now we'll in today's session we'll look into one of the another important article, Article 21. Article 21 of the Indian Constitution, and many times Article 21 is known as the parent to all other rights because other rights can be given explanation or they can derive their authority from the Article 21 itself. So for that purpose, Article 21 plays very crucial role among all the fundamental rights. So there are different subsidiary rights in the Article 21 also. There is right to primary education, there are rights to dignified life, right to privacy, right to leisure, right to legal aid, and there are many other rights jaha pre ame discuss kariba. So Article 21 bujhiba pai hele we need to understand three important terms. There are three important terms we need to understand. Once we are clear with these three terms, then am Article 21 automatically bujhi pariba. So Article 21 re जदि हमें देखिबा, then there are three keywords. There are three keywords. The first is life, then it is personal liberty, and then it is procedure established by law. Life, personal liberty, and procedure established by law. So let's first understand what exactly procedure established by law is. Procedure established by law. Basically, this concept has been inspired by the American Constitution, but American Constitution discusses about no person shall be deprived of his life and personal liberty except due process of the law. Except due process of law. So due process of meaning quantity. Due process means the court they can control the action. Kahar action, legislature as well as executive. They can control the action of both legislature as well as the executive. But along with, they can also raise question related to whether the law is substantive, related to substantive nature of the law as well as related to the procedural nature of the law. Both to substantive as well as to the procedural nature of the law. So substantive basically ame dekhanti ki whether the authority has complete whether they are competent enough to formulate any laws or not. ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ law କୁ formulate କରିବା ପାଇଁ ନା ନ କରିବା ପାଇଁ. And in procedure established by the law, what we check ki we discuss about, or the judiciary discusses about the procedure through which the law will be implemented. को process अनुसारे ये law implement करा जिवो. Basically it is check करा जिवो कि whether the law is in conformity with the process of natural justice or not. यदि natural justice को ये confirm करूनी, then automatically the law will be declared as invalid or ultra vires in nature. So according to Ambedkar, Article 21 को हम include करिया को चाहूँते, but by Aladi Krishna Swami Iyer, she कहले कि जतों social justice related law को हम implement करिबा, so we need to use due process of the law. हमको due process of the law को ठीक implement करिया को पड़िबो, by use करिया ପାଇଁ पड़िबो. So the concept, data concept भितर हमें difference बुझिबा कि procedure established by law and due process of the law भितर difference कोन. Basically procedure established by law, it was originated from England. And our meaning होची कि as per the usage and the practice, as per the usage and as per the practice laid down by the statute, procedure established by law अनुसारे judiciary will examine any law which is made by the legislature, from the perspective of legislative competence, कि या पाखरे legislature पाखरे legislative competence अछि कि नाही law formulate करिया पई. And proper legislative process को हमें adopt करिसंती बा accept करिसंती ना नहीं when the law was passed. तो एई जगह रे judiciary cannot go behind the legislative motive বা legislative intention को judiciary check करि परिबे नाही. Article 21 basically procedure established by law and due process of the law को I have already discussed कि Article 2021 पूर्व वीडियो लेक्चर रे आपण देखि परिबे. 2021 जेतरो मु डिस्कस करथली 20 भीतर 21 रो ए दिटा पार्ट को डिस्कस करथली, procedure established by law and due process of the law. Rest of the part आउ किछि डायनामिक एंगल अछि Article 21 न जहा को वर्तमान हम डिस्कस करबा.
सो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ ये मेनका गांधी केस रो आसीथिला मेनका गांधी केस रो आसीथिला सो एको बुझिया पय हेले वी नीड टू अंडरस्टैंड पर्सनल लिबर्टी personal liberty. So personal liberty रे for the first time in India concept of personal liberty it was started in the A.K. Gopalan case. A.K. Gopalan case रे ये आसीथिला A.K. Gopalan versus State of Madras ए जगह सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कले आर्टिकल 21 रो इंटरप्रिटेशन देले कि पर्सनल लिबर्टी सेतेबेले वायोलेट हुए जेतेबेले देयर इज अ फिजिकल कांस्टेंट और व्हेन देयर इज अ कोएर्सन जेतेबेले कोएर्सन बा किछि फिजिकल कांस्टेंट थाए से समय पर्सनल लिबर्टी वायोलेट हिता है बट लेटर ऑन Menka Gandhi case when his passport was impounded by the authority at that point of time Menka Gandhi केस कले सुप्रीम कोर्ट रे की पर्सनल लिबर्टी वायोलेशन हेची एंड मेनका गांधी केस रे ही आर्टिकल 21 नो वाइडर इंटरप्रिटेशन देथिले सुप्रीम कोर्ट जो जगह येठी टेस्ट ऑफ रिजनेबिलिटी रो कांसेप्ट आसिला एंड ईच एंड एवरी लॉ दैट शुड बी जस्ट फेयर एंड रिजनेबल ये मीनिंग आसिला आर्टिकल 21 नो एक्सप्लेनेशन ने मेनका गांधी केस रे मेनका गांधी केस एंड एके गोपालन केस को मु 20 और 21 आर्टिकल जेतल डिस्कस करथिले लास्ट टाइम मेथरे डिस्कस करिछि आपण तार डिटेल डिस्क्रिप्शन पई से YouTube सेशन को आपण रेफर करि परिबे then talking about life see life has many aspects life रे many aspect अछि like मु कहबी कि life includes health it includes environment then it includes dignity it includes information so there are many aspects of life रो जदि हम aspect देखबा एटी बहुत अधिक aspect अछि and each and every aspect it was declared in article 21 first time पाई P Rathinam versus Union of India case रे section 309 of the Indian Penal Code it was challenged 309 of the Penal Code कहूची कि right to suicide commit to suicide commit करबा against जो punishment prescribe हिता है ये Indian Penal Code रो article section 309 ने prescribe हेची तो एटी क्वेश्चन होची कि हमकु जदि किछ अधिकार दिया जायता है then not to accept that rights is also our right let's say कि article 21 ने right to life and right जेतबे हम पाखर right to life अछि and automatically we have right not to life it means right to die हम पाखर right to die रे अधिकार मध्ये automatically रहउछि तो एई अंडर रे जेतबे जे ठीक कन्विक्ट थिले जहा को अरेस्ट करा जायतिला सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पेनल कोड अनुसार फॉर अटेम्प्टिंग टू सुसाइड सेट 309 रो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कले अगेंस्ट आर्टिकल 21 so कहले कि right to life also includes right to die तो ए जगह रे सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन नैरो थिला एंड ये थी right to die को बा कोनोसी राइट्स को हम एक्सेप्ट करबा बा रिजेक्ट करबा ये अधिकार मध्ये सिटीजन मान को देथिले या व्यतीत जो देखिबा नेक्स्ट केस असला ज्ञानकौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब in that case honorable supreme court again gave the verdict that you cannot give up any right especially article 21 right to life जोटा दिया जाय छि माने you are bound to accept that and you cannot give off right to life बा तुमके right to die रो अधिकार नाही then it is right to privacy first time पाई खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस रे ये ओरिजिन हितला ये कांसेप्ट प्राइवेसी रो मीनिंग होची कि अनऑथराइज्ड डिस्टर्बेंस इज द वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी यदि अनऑथराइज्ड डिस्टर्बेंस हुए इन द लाइफ ताको हमें प्राइवेसी बोली दैट विल बी नोन एज वायोलेशन ऑफ द प्राइवेसी देन नेक्स्ट केस आसिला PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस याको टेलीफोन टैपिंग केस बोली जाना जाय टेलीफोन टैपिंग केस बोली जाना जाय एटू राइट टू प्राइवेसी को कंफर्म करा जायछि कि राइट टू लाइफ आल्सो इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी जदि फोन ने कही कथा होची देन तार टेलीफोन को हम टैप करि परिबानी बा ताको पब्लिकली एक्सपोज करि परिबानी नेक्स्ट राइट टू एनवायरनमेंट बा राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट अंडर आर्टिकल 21 ये रिलेटेड डिस्कशन आसिला RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस एथिरे सेठी बहुत इलीगल माइनिंग चलीथिला सो इलीगल माइनिंग पई एनवायरनमेंट पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ी चलला एंड नेगेटिव इंपैक्ट पड़िला हेल्थ ऊपर लोक मानकर सो एथि पई एटी केस फाइल्स माने सुप्रीम कोर्ट रे करथिले बाय यूजिंग आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट रीट इशू करा गला एंड फाइनली RLEK केस देन MC मेहता केस देन T दामोदर राव केस ई सब केस पर फाइनली कंफर्मेशन आसिला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट comes under article 21 of the Indian Constitution by right to life under ये आसुची
सो यार रिलेटेड जो अलग डिस्कशन अच्छी प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ या पर मु बेसी डिस्कशन कलिनी आज बिकॉज लास्ट टाइम मु आप डिस्कशन करि सारिछि बिकॉज लास्ट टाइम मु आप ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिछि कि प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ कोन एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ कोन आई विल रिकमेंड कि आपण से क्लास को थोर देखि दियंतु सो दैट ता ऊपर कांसेप्चुअल क्लैरिटी संपूर्ण भाव आसी जिवो and we don't need to discuss much about that या व्यतीत जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक थिला से टॉपिक को हम आज डिस्कस करिवा वर्तमान जहा को डिस्कस करूछंती सो अदर डायनामिक्स भीतर हमें देखिबा राइट टू लाइफ रे आ कोन कोन आसुची व्हाट एल्स आर देयर इन द राइट टू लाइफ right to live with human dignity, right to decent environment including pollution free water and air protection, then right to livelihood, right to privacy, right to shelter and right to health. Right to privacy, shelter and health is सब आसुची all these connotations of article 21 they are coming under article 21 ये सब article 21 under ही आसुचंती okay the next is right to free education up to 14 years of age right to free education up to 14 years of age ये आसिला हमरो आर्टिकल 21 ए रे जे पर नाम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा जिवो पूर्वरु ये डीपीएसपी रे थिला इट वाज देयर इन डीपीएसपी आर्टिकल 45 वर्तमान भी डीपीएसपी रे अछि बट एको फंडामेंटल राइट डीपीएसपी रो फंडामेंटल राइट करिवार अर्थ हम एको एनफोर्सेबल करूचे एको हम जस्टिसेबल इन नेचर करूचे कि जदि यार वायोलेशन होउची देन अ पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट डायरेक्टली द नेक्स्ट इज right to speedy trial right to speedy trial Indian judiciary system रे केते लेट हुए ए विषय यू माइट बी नोइंग कि गोटे पर्टिकुलर केस केते दिन हमको समय लागे डिस्पोज होवा पई सो स्पीडी ट्रायल भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आसुची बट द थिंग इज दैट इट शुड बी इन कन्फर्मिटी टू मेनी अदर फैक्ट कहले हम एठी कोन बुझंती other fact कहले हम एठी कोन बुझंती जेमति कि स्पीडी ट्रायल पई वी शुड हैव नाउ सफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस बा कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब ठीक रहबा हम पई पाखरे दरकार सो दैट स्पीडी ट्रायल हे परिबो अदरवाइज हे परिबो नाही देन राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग हैंडकफ पुलिस अरेस्ट कला बेले हैंडकफ देखिथिबे समस्त पाखरे पकई हुएनी माने सब विक्टिम कन्विक्ट मानकू पुलिस अरेस्ट कला बेले हैंडकफ पकई परिबो नाही सो हैंडकफ पकेवा पई पुलिस पाखु फर्स्ट कोर्ट ऑर्डर आसीबा दरकार बिकॉज़ दैट इज वायोलेशन ऑफ personal liberty then right against inhuman treatment कहले जहा ह्यूमन नेचर नुहे बा अमानवीय अत्याचार ऊपर ये डिस्कस करबा चाहूची बा बेसिकली हम जदी कहबा कि इनसाइड द जेतल पुलिस अरेस्ट करथाय काहाकू देन आउटसाइड द लॉ जाई कि बियॉन्ड द लॉ जाई पुलिस कोनोसी प्रकार स्टेप नै परिबोनी बा पुलिस कोनोसी प्रकार अरेस्ट करि परिबोनी बा स्टेप नै परिबोनी बा अननेसेसरी टॉर्चर जोटा ताकू करि परिबोनी सो ये सब इनह्यूमन ट्रीटमेंट ये केवल पुलिस द्वारा नुहे रादर बाय एनी अदर इंडिविजुअल पई अगेंस्ट रे भी आसी पारे बा अलगा कोनोसी ग्राउंड रे भी ये केस आसी पारे राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन जदी एग्जीक्यूशन डिले होची कि जनकर देखथिबा राजीव गांधी मर्डर केस रे जेतबे आसीथिला ये केस सेतबे डिले ही चलला बहुत दिन जो मान को फांसी दबार थिला 5 वर्ष परे 2 वर्ष परे 3 वर्ष परे तो ये गोटे बहुत अधिक मान ड्यू डेट तार ये लेट ही जाइथिला बहुत ये कारणरू बाय सुप्रीम कोर्ट अगेन गोटे वर्डिक्ट देले कि जेहेतु से माने गोटे चिंता रे पहुंचुंती कि आज फांसी तो पाइबार अछि काली फांसी पाइबार अछि ये ग्राउंड रो से मान को फांसी दिया गला नहीं केवल लाइफ इंप्रिजनमेंट रे रखा गला सो डिलेड एग्जीक्यूशन इज आल्सो अगेंस्ट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी then right to travel abroad it right to travel ऊपर दीटा कथा मु कहि सारथिली right to travel inside India and right to travel abroad right to travel inside India ये फ्री मूवमेंट भीतर आसुची आर्टिकल 19 अंडर रे एंड यदि इंडिया रो बाहर को जाउछंती फॉरेन जाउछंती then that movement or that travel comes under article 21 then right against bonded labor माने हम ताकू जबरदस्ती रखी काम करूछंती किछि टंका पैसा दउ नांती that will be a violation of article 21 also right against custodial harassment करा जाय परिबो नै when the person is in the custody of police custody रे harassment करा जाय परिबो नै because that will be violative to article 21 of the Indian Constitution then right to emergency medical aid ये मध्ये article 21 under आसुची so many of the rights which are coming under article 21 they are self explanatory आपण निजे ताको पढिले बुझी परिबे बा हम डिस्कशन मध्ये कले या पर बहुत गुडे या सहित मु आ गुटे जिंसो कहबी कि article 21 and emergency
आर्टिकल 359 को यूज करी इंडिया इमरजेंसी लागि थला त 1962 इंडिया चाइना वार पई 1971 इंडिया पाकिस्तान वार पई एंड 1976 इंटरनल इमरजेंसी पई ये समय रे गोटे केस आसीतला एडीएम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ जबलपुर वर्सेस एस शुक्ला केस एथिरे आसीतला कि ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 21 कैन बी सस्पेंडेड बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44th Constitutional Amendment Act Article 359 को amend कला and तापरठू during emergency Article 21 cannot be submitted it cannot be suspended याको मन रखिबे कि 44th Constitutional Amendment Act पूर्वरु Article 21 को emergency समय रे suspend करा जाई पारुतिला but later on 44th Constitutional Amendment Act परे याको suspend करा जाई परिबो नाही. Then the most important article is Article 21A, right to education. Your basic objective thila education for all. Basic objective thila education for all, and it was added by 86th Constitutional Amendment Act of 2002. Article 21A declares that the state shall provide free and compulsory education to all children between the age of 6 to 14 years. Children between the age of 6 to 14 years एमानको free and compulsory education provide करा जिवो because education को पूर्वरो DPSP रु एटी fundamental right को आनिवार reason मु कहि सरछि कि याको justiciable करिया पई to make it justiciable to make it enforceable or to make it legally enforceable fundamental right रे रखा जाई छी. Education human resource development रो गोटे important organ आमे जदि गोटे कंट्री को डेवलप करिया को चाहू छन देन वी नीड टू डेवलप द एजुकेशन सिस्टम जदि गोटे कंट्री को डिस्ट्रॉय करिया को चाहू छन वी कैन डिस्ट्रॉय द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री. सो ए कारण जेहेतु इंडिया र सब लॉ मानक भितर ऑर्गेनिक एंड द फंडामेंटल लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव सम इंपोर्टेंट प्रोविजंस इनसाइड द फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कारण राइट टू एजुकेशन को हम एठी रखि छथि. So this is related to Article 21. Even before this amendment, the Constitution contained a provision for free and compulsory education for the children under Article 45 in the Part 4. However, being a directive principle, it was not enforceable by the court. हमें Part 3 and Part 4 differentiation जेतबेले पढ़ितिले सेतबेले देखितिले कि Part 3 is enforceable by the court, whereas Part 4 DPSP's directives they are not enforceable. एमाने enforceable नुहंती. Enforceable न हबार रीजन कि बेसिकली एमाने सोशल राइट्स अछंती बा पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करछंती स्टेट को पब्लिक पॉलिसी को टाइप रो फॉर्मुलेट होबा दरकार एंड पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये गोटे फाइनेंशियल नेचर कि हम पाखरे फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग केते अछि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हम पाखरे केते अछि इन द सेम वे वी कैन फॉर्मुलेट पब्लिक पॉलिसीज तो जति की फाइनेंशियल रिसोर्स अछि ताकू यूटिलाइज करी कि हम करि परबा जति फाइनेंशियल रिसोर्स कम अछि एंड पीपल विल स्टार्ट फाइलिंग केस इन द सुप्रीम कोर्ट कि माय राइट्स हैज बीन वायोलेटेड कि डीपीएसपी मते मिलिलानी जहा मिलबार कथा ये कारण पई डीपीएसपी को डीपीएसपी को एनफोर्सेबल करा जाय नाही बा जस्टिसेबल करा जाय नाही. I hope you are clear with Article 21. I will recommend कि last session ने जतन Article 20 पढ़ितली 20 सहित 21 ने due process of the law and procedure established by law discuss करितली तो ताकू आ गोटे थर देखि देबे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऊपर किछि पॉइंट कहूची जोटा में लास्ट क्लास रे बोथ मिस करतिले. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रे तीनटा इंपोर्टेंट पॉइंट अछि. द फर्स्ट इज नो पर्सन शैल बी पनिश्ड अनहार्ड. नो पर्सन शैल बी पनिश्ड अनहार्ड यार माने होची कोनोसी लोकठु एक्सप्लेनेशन न पाई ताको हम पनिशमेंट प्रोवाइड करि परिबा नाही. So the next is no man shall be a judge of his own case. No man shall be a judge of his own case. निज केस रे कोनोसी लोक निजे जज हेई परिबे नाही. Then an authority must be bona fide without any bias. कोनोसी अथॉरिटी बायसनेस सृष्टि करि परिबेनी बायस हे किछि वर्डिक्ट देई परिबेनी रादर impartially से प्रॉपर अथॉरिटी को वर्डिक्ट दबार अछि. सो बेसिकली नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये आर्बिट्रेरीनेस को कम करिया पई अछि. rather यदि हम देखिबा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रा acceptability this is not acceptable or it is not available only in certain geographical boundaries or in a particular country. Rather this is an universal concept throughout the globe. Almost all the civilized countries they follow the process of principle of natural justice.
So, according to Supreme Court of India, the principle of natural justice, they are based on the different principle of the Constitution, and this they are the principle को हमें consider करी परिवा as one of the basic structure of the Indian Constitution. So, जेहेतु principle of natural justice गोटे basic structure, we cannot violate that justice or natural justice को violate करी परिवानी whenever a law is formulated or whenever a law is implemented. So this is all about article 21. जदि 21 related question आसे जेमति हम तीनटा पार्ट रे डिस्कस करले लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, लाइफ कोन, पर्सनल लिबर्टी कोन, देन राइट्स कोन, राइट टू लाइफ कोन, राइट टू डाई कोन, प्लस राइट टू एजुकेशन, अदर राइट्स जहां हम डिस्कस करथिले राइट टू शेल्टर, राइट टू लीगल एड, राइट टू हियरिंग, ये सब सहित डिस्कस करिवे along with procedure established by law and procedure due process of the law. So those who are not there in Unacademy Plus, they may join to Unacademy Plus. Use the referral code EGOS so that you will be getting 10% discount upon your subscription amount. Explanation subscription description box रे दिया जाइछि. You can check the description box. अपन description box देखि परिवे. So to complete explanation पाइबा ପାଇଁ. So thank you everyone. See you in the next class.